सैम भाई, आई एम अ फुल टाइम बिजनेस ओनर. ओके. मेरे पास हार्डली एनी टाइम है स्टॉक मार्केट में कुछ भी करने के लिए, घुसने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए. ओके. हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज नहीं तो कल मुझे कुछ ना कुछ तो स्टॉक मार्केट में करना चाहिए. और वो टाइम पे मुझे निटी-ग्रिटीज या डिटेल्स में घुसने नहीं है. राइट. तो मिनिमम से मिनिमम स्टॉक मार्केट में उतरने के लिए फॉर someone who's starting from scratch like me, Okay. what do they need to do? Okay, so you don't know anything about stock market, so you are an absolute beginner. Absolutely. So stock market एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको करना चाहिए, सबको, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज कैन बी ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम एंड इट कैन ऑल्सो बी योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो. स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा है कि आप इसको शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो, बट इनिशियली यू कैन स्टार्ट विथ योर कंफर्टेबल लेवल. सो लेट मी टेल यू हाउ टू स्टार्ट. मतलब एज ए लेमन, एज ए एब्सोल्यूट बिगनर, व्हाट इज दैट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द स्टॉक मार्केट. Okay, so the first thing that is required to start a stock market is knowledge. Knowledge is the first and foremost thing, because when I started, I started trading randomly, because of which I made a huge loss in the market. इनिशियली मेरा प्रॉफिट हुआ, बट प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आने के बाद फिर ज़्यादा ट्रेड कर लिया उस समय, क्योंकि मेरे पास कैपिटल अच्छा खासा था. देन आई मेड लॉस. Okay, but the first and the primary thing that is required is knowledge. Okay, second thing that is required is an account, trading account आज के डेट में बहुत ही सिंपल है, ऑनलाइन प्रोसेस है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एजेंट या किसी को भी. सो घर पे बैठ के ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो विद इन 24 आवर्स, और विद इन लेस देन 24 आवर्स अकाउंट विल ओपन. Okay. ठीक है. What do you think that there are certain account like Sher Khan or Zerodha that works better than the rest? Which ones should I at least consider? Okay, so there are actually multiple broker platforms right now in the market. मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है फायर्स, एंड रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग धन एज वेल. धन इज़ ऑल्सो वेरी गुड विथ ए लॉट ऑफ फीचर्स दैट इज़ वेरी हेल्पफुल स्पेशली फॉर द बिगनर्स. And Fires is very good because it's very much user friendly, and the things, the parameters that is there is designed in such a nice way that even a beginner can trade in the market without any proper or any further analyzing into the application and all those things. So I will suggest Fires or Dhan. Okay. There are multiple like एंजल बुकिंग है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट आई विल सजेस्ट फायर्स और धन. Fantastic. So first thing you said, knowledge is important. Second, you need a demat account. Fantastic. What else? उसके साथ आपके पास सेविंग्स अकाउंट तो होगा ही. ओके, एंड विच इज़ द थर्ड थिंग. ओके, बिकॉज यू नीड टू कनेक्ट योर सेविंग्स अकाउंट विथ योर डिमार्ट अकाउंट टू डू द ट्रांजेक्शंस. प्रॉफिट हुआ, विड्रॉ करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, डिपॉजिट करना है. सो यू नीड ए सेविंग्स अकाउंट, यू नीड ए डिमार्ट अकाउंट, यू नीड नॉलेज, यू नीड ए गुड इंटरनेट कनेक्शन. ओके, एंड यू नीड ए गुड कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि हम मोबाइल से कर लेंगे, लेकिन मोबाइल में ऐसा है ना कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए एटलीस्ट थोड़ा बड़ा स्क्रीन चाहिए, जहाँ पे आप चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हो, आप चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो, डिफरेंट उसके जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स वगैरह होते हैं अच्छे से पता चलेगा वहाँ पे. सो यू नीड ए बिग स्क्रीन फॉर विच यू कैन परचेज ए वेरी गुड कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप एंड एक इंटरनेट कनेक्शन. बस ये 4-5 चीज़ चाहिए, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नॉलेज.
Uh, so where do we start with knowledge? You said that there are 4 or 5 things that you need. Knowledge, I want to go in a little bit deeper on knowledge. Second thing you said demat account. Third thing Savings account जो mostly सब लोग के पास है. You also talked about Laptop. that internet connection and something that has a big screen. Don't do it on your mobile, Right. because ultimately you need to Analyze it. the chat. Yeah, of course ये चार्ट और कैंडल स्टिक तो मेरे सर के ऊपर से गया. मुझे एक That ही is very. candlestick पता है. That is very easy. हाँ, मुझे एक ही कैंडल स्टिक पता है वो जो क्या है? मोमबत्ती का बना हुआ है. Okay. तो वो हम बात करेंगे शायद हाँ, बाद हाँ, में. बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, what kind of knowledge do I need to know? In terms of knowledge, see what is exactly stock market and how you can start trading in the market. एक दो वीडियो मैंने बनाया था एक one of my friend श्रीमाया के साथ. So in that video I have discussed everything कि stock market क्या है, then उसके अंदर जो different chart patterns होते हैं, different candlesticks patterns होते हैं, वो कैसे उसको analysis कर सकते हैं. तो वो सारी चीज़ों के मैंने डिस्कस किया है. एंड और अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए कि स्टॉक मार्केट में नॉलेज के मतलब नॉलेज एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो मतलब आप कैसे एक मार्केट में स्टॉक को या इंडेक्स को आप एनालिसिस कर सकते हो एंड व्हाट आर डिफरेंट कैटेगराइजेशन. जैसे कि आप इंट्राडे कर सकते हो, या तो फिर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, या तो फिर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हो. Multiple things are there. So now the concern is like how much time you can give to the market, okay, and which segment is best suitable for you and your timing. Right. So according to me, as a business owner, the most part of my day goes in my business, right? And I am okay with perhaps giving some time to analysis, maybe once in a week for 2 That is hours or fine. something, Okay. right? I'm not very interested in looking at it every day. If I can play a long term game, I think that works better for me. So what are your recommendations? Long term is kind of like long term. There are it is coming under investing. So investing में there are 3 kinds, like short term, medium term and long term. So long term मतलब आप एक स्टॉक खरीद के उसको 10 साल 20 साल 25 साल के लिए उसको होल्ड करके रख रहे हो. Yeah, absolutely. Medium. I don't. I think that starting from 5 years onwards, right now I'm 40. Right. I have to. While there are other investment vehicles that I am already doing, stock is one more investment mechanism for me. Where I'm not looking to immediately make any money, but over a period of time, since I'm a businessman, कोई मुझे pension नहीं देने वाला. Okay. Right? So from that perspective, I'm looking at it as a long-term investment for my retirement purposes, क्योंकि तभी मेरे business का हालत मुझे पता नहीं रहेगा. Right? I need some backup other than the other investment vehicles that I have. Okay. So I'm looking at stock markets like that. Okay. So long term आप करो. लॉन्ग टर्म एक्चुअली सबको करना चाहिए, बट आई विल अगेन ऑल्सो सजेस्ट यू टू डू शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म मतलब जैसे कि आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड यू आर होल्डिंग इट फॉर लाइक 6 months और 1 year. सो इससे होगा क्या कि आप एटलीस्ट हफ्ते में या महीने में एक बार जब चार्ट को देखोगे ना, तो मार्केट को और ज़्यादा डीपली आप समझ पाओगे. चार्ट कैसे, प्राइस कैसे बिहेव करता है, प्राइस में डिफरेंट मूवमेंट कैसे होती है, एंड जो डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स है, डिफरेंट कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स है, ये सारी चीज़ों को और थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे. और थोड़ा सा जो आपका लर्निंग कर्व है ना, वो थोड़ा सा फास्ट होगा. हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट अगेन आप आराम से होल्ड करके बैठ जाओगे और चार्ट को बार बार नहीं देखोगे, और जब तक आप चार्ट को एनालिसिस नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं. राइट. सो आई विल सजेस्ट लॉन्ग टर्म करो और उसके साथ शॉर्ट टर्म भी कर लो. Right. Awesome. Thank you so much for clearing that out for me. Because मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि I don't have a lot of time. I basically have some time, and time is a premium thing for me. I earn money based on my time, so I can't put in a whole lot of money from that perspective. However, this makes sense कि short term, if it is 6 months to a year, then this is okay.
द डेली वीकली थिंग मेरे पास वो टाइम नहीं है वो करने के लिए. नहीं ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म कर भी रहे हो ना, आप वीकेंड में आधा घंटा टाइम निकालो, दैट इज इनफ. अगर आधा घंटा टाइम भी निकाल के आप थोड़ा सा चार्ट को टाइम देते हो, एनालिसिस करते हो ना, दैट इज इनफ. एंड व्हेन यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग द मार्केट, एनालाइजिंग डिफरेंट स्टॉक्स ना, यू विल गेट एडिक्टेड अबाउट द स्टॉक मार्केट. बिकॉज ये हमें देख के लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट वंस यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग एंड वंस यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ in that chart, then you will feel good and you will feel like I will do more and more analysis. Fantastic. I'm certain that it's very interesting for a whole lot of people. Of course, I've not gotten into it, so I can't really comment about how interesting that would be for me. Can you tell me, for just learning the basics of it in terms of how to read analysis, how to read financial papers or reports that come from companies, so that they know that they me mostly this is all for me. Okay. How do I study? वो एक study होना चाहिए ना, basically whatever you're investing in, as per whatever little knowledge I know, is that I would not perhaps invest in unknown players, right? At least ये मेरे दिमाग में है. क्या ये सच है? Unknown players के लिए भी अपने को स्टडी करना चाहिए, उनके financials and all of that? What is means by unknown player? I mean, the stock which is not known to you. Yeah, the stock which is not known to me. Definitely. Even last time also I told in one of the video कि अगर आपको नहीं पता है कि एनालिसिस कैसे करना है, स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, जस्ट आइडेंटिफाई 5 or 6 or 10 such product which you are using since last 10 years. Okay, maybe it's a car you are driving, maybe it's a phone that you are using, maybe it's a masala that you are using in your kitchen, maybe it's a biscuit that you are using, or maybe it's a cigarette, right? So whatever brand you are using since last 10 years, so you can trust on that brand. If you are liking that product of that brand, then maybe for another 5 years or 10 years you will still like that brand, that product. And if that product or that brand is doing good in the market, then for another 10 years also that product will do good in the market. If that product will do good in the market, then that stock will also do good in the market. Right. So you're saying that if you're like a rank beginner like me, then look at the brands that you know, because if the brands are something that you can identify, that you trust those brands, उनके products आप trust करते हो तो brand को trust करते हो, अगर brand को trust करते हो तो company को trust कर सकते हो, company को trust कर सकते हो तो उनके stocks को trust कर सकते हो, mostly trust कर सकते हो. Yeah. Okay, that makes absolute sense to me. Fantastic. But again, I will suggest you, whenever you are identifying those kind of stocks, I will suggest you कि just distribute your capital into different stocks. Don't just trust on single stock, because ऐसे भी कुछ सिनारियोज हैं हमारे पास जो सारे कंपनी अच्छा कर रहे थे मार्केट में, बट कहीं ना कहीं because of some things that was happening in the back end in that company, those companies went bankrupt. जैसे कि ES Bank है, जैसे कि Jet Airways है. That is a very random way of selecting stocks that I am suggesting you. But again, the safe side is distribute your capital into different stocks, right? So that your capital will save. Also, I'm guessing what you're also saying is that you study a little. आपको उससे आप बच नहीं सकते हो basically. अच्छा, तो ठीक है. I completely understand that. Anything else I need to know as a complete beginner
who's getting into the stock market? Yeah, don't be greedy in the market because market is such a thing जहाँ पे हमें पैसा दिखता है, और जो पैसा हमें दिखता है, जो पैसा बनते हुए दिखता है, वो पैसा हम अगले ही दिन हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई माइंडसेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. सो आई विल सजेस्ट कि डोंट बी ग्रीडी इन द मार्केट and choose the stock wisely and bas. Fantastic. Thank you so much, Sam bhai. Any final words you would like to say? Yeah, so actually मैंने जब शुरू किया था ना मार्केट में, I started working in the market with my intuition. मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, एंड उस समय मैं थोड़ा बहुत न्यूज़ को फॉलो करता था. आई विल सजेस्ट कि डोंट बिलीव ऑन दोज न्यूज़ चैनल्स. ओके, मैं न्यूज़ को फॉलो करता था एंड मैं थोड़ा बहुत अपना इंट्यूशन यूज़ करके मार्केट में ट्रेड करता था. तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ. फर्स्ट 3 मंथ्स में मेरा ऑलमोस्ट अराउंड 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था. बट अगेन बिकॉज ऑफ दैट प्रॉफिट आई वेंट इनटू सम सिचुएशन विच इज़ कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस. एंड ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा जो कैपिटल मैंने अर्न किया था प्लस जो मेरा बेस कैपिटल था, टोटल मेरा लॉस हो गया था. ऑलमोस्ट 15 लाख का मेरा लॉस हुआ था. सो आई विल सजेस्ट कि बिफोर स्टार्टिंग इन द मार्केट, बिफोर वर्किंग इन द मार्केट, थोड़ा सा कहीं से नॉलेज आप गेन कर लो. यूट्यूब में भी आपके लिए थोड़ा सा ओवरवेल्म हो सकता है. सो आई विल सजेस्ट यू कि जस्ट hire a mentor and just enroll into some course because जैसे मेरा 15 लाख का लॉस हुआ था, लाखों रुपए लॉस करने से अच्छा है कि आप कुछ हज़ारों रुपए का एक कोर्स लेके चीज़ों को थोड़ा सा सीखोगे और सीखने के बाद आप मार्केट में काम करना शुरू करोगे. सो दैट इज़ ए final word that I will share with you and all of my audience. Thank you so much for asking this question. Thank you so much, Sam bhai. Thank you so much. And if you are watching this video till this end, then I hope you are liking this video. So please do subscribe to the channel and click on the bell icon so that you will get notified about all the future videos that I am going to upload. And stay tuned because there are so many things that I am going to upload in the upcoming days. And please do listen to my podcast on your favorite podcasting platforms. It is already available in Spotify, JioSaavn, Amazon Music, Audible, everywhere. Apple Podcast, Google Podcast, YouTube Music. So stay tuned and keep checking Mindful Trading Hub.